first we want to understand ये अब स्ट्रेट क्या होता है, do we all understand it, है ना? When we talk about strait, basically we refer to two large bodies connected by a small body. So let's say this is a land mass, this is another land mass, इधर water body है, इधर water body है, this small water body which is connecting these two large water bodies is a strait, right? If you go in the world, these are some of the important straits. We will be discussing each of these straits separately. हम इन सब के detail में जाएंगे, we'll talk about it. But at one place, if we have to quickly revise all the important straits, so you would be wondering, क्या सर इसके अलावा कोई straits नहीं पढ़ रहे क्या? तो पढ़ रहे, definitely. We will study more straits beyond this also. But these are the most important ones, and we should. The first thing that we should start with whenever we start revising mapping section would be to revise these straits. So जैसे in mapping, like in my classes, I try to go systematically. मैं कैसे चलूँगा? I'll go from east to west, right? तो जैसे आज हम एशिया से शुरू कर रहे हैं, एशिया में भी I'll be starting from this side and we'll end with West Asia. So tomorrow we'll start Europe and Africa. Then we'll go to America. तो tomorrow we'll start Europe and Africa. Then we'll go to America. तो states में भी जब हम शुरू करें, the first state is Bering Strait. You will see यहाँ पे Bering Sea है, we know that. ऊपर है चुक्सी सी, तो चुक्सी सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करने का जो स्ट्रेट है यहाँ पे, that is Bering Strait. Similarly, it's written here Bering Sea and Chukchi Sea, but Bering is on the lower side, Chukchi on the upper side. Then if you come here, there are many straits here also, we'll study about it, but one important strait is here, Taiwan. यहाँ पे ये चाइनीज मेनलैंड है, यहाँ बगल में एक स्मॉल आइलैंड नेशन है ताइवान. नाउ दिस ताइवान एंड चाइना के बीच में जो स्ट्रेट है, इट इज कनेक्टिंग, दिस इज साउथ चाइना सी एंड दिस इज ईस्ट चाइना सी. तो ताइवान स्ट्रेट इज कनेक्टिंग व्हाट? इट इज कनेक्टिंग साउथ चाइना सी विद द East China Sea. ऐसे ही if you come here, let me take you to this map. If you come here, you will see ऊपर क्या है, ये मलेशिया वाला पेनिनसुला, नीचे सुमात्रा, and बीच में we have strait. So here we have actually two different states. One we call Singapore Strait and then we call Malacca Strait. These two straits do what? इस तरफ we have Pacific Ocean, on this side we have Indian Ocean, and Pacific Ocean का भी this is what? South China Sea, this is Andaman Sea. So Singapore Strait and Malacca Strait, they're connecting what? They're connecting South China Sea with Andaman Sea. Or in a way, on this side we have what? Pacific Ocean. On this side what do we have? Indian Ocean. So it is connecting Pacific Ocean with Indian Ocean. Are we getting it? So abhi, like we will study each of these straits in more detail, the neighboring countries in more detail. We are just trying to summarize all the straits at one place, all the important straits at one place. Then if you come to Palk Strait, Palk Bay को Bay of Bengal से connect करेगा, Palk Strait, this we know. Then Hormuz Strait. Hormuz Strait, अगर मैं आपको, if I take you to the entire map, if you come here, this part is Hormuz Strait. This is Persian Gulf, this is Gulf of Oman. Persian Gulf और Gulf of Oman को जो strait connect कर रहा है, जो small narrow water body connect कर रहा है, that is what? Hormuz, Strait of Hormuz, a very important strait. ऐसे ही if you come here, we have Red Sea, we have Gulf of Aden, and बीच में there is a very narrow water body which is connecting Gulf Sea and Red Sea and Gulf of Aden, that is Bab-el-Mandeb Strait. So this was Strait of Hormuz, this was Bab-el-Mandeb Strait. Now when you come here on this side, there are 3-4 important straits that we'll talk about, but first briefly again, जिन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है कि सर एक बार में इतना कैसे याद होगा, अभी just we are summarizing everything. We will study when we will go to each region. No, we will study each of these straits in more detail. There you will be able to understand it. But at the end of booklet, जब ये पूरा complete हो जाता है, you should be able to come on the first page and quickly revise all the straits which are given here. Okay, तो अभी तक
Bering Strait connecting Chukchi Sea with Bering Sea, Taiwan Strait connecting East China Sea with South China Sea. यहाँ पे भी have Singapore Strait and Malacca Strait. Both बहुत पास में है. They're connecting on this side. We have what? South China Sea. On this side, Andaman Sea connecting South China Sea with Andaman Sea. और sorry, अब South China Sea का भी नीचे extension Java Sea आ जाता है. तो यहाँ पे Java Sea and Indian Ocean लिखा है. Andaman Sea is part of Indian Ocean. Now, Palk Strait we understand. Hormuz, Persian Gulf and Gulf of Aden, right? Sorry, Gulf of Oman, Persian Gulf and Gulf of Oman, and then Bab el Mandeb, Red Sea and Gulf of Aden. यहाँ तक सबको क्लियर है? पक्का? Okay. Then if you go to Europe, कुछ we'll talk about some of the straits. First set of straits that we want to talk about. उसके लिए ना let's come here. This is what? Black Sea. This is Mediterranean Sea. यहीं पे ना if I increase its size a bit, this is Turkey and this is Sea of Marmara. Here, this part of the sea is getting connected to Sea of Marmara by a small strait, and this is another strait which connects Sea of Marmara with Black Sea. One of them is Sea of Bosphorus. यहाँ पे आओगे आप, उसका नाम Bosphorus Strait, and other one is Dardanelles Strait. तो Sea of Marmara को ये connect कर रहा है, Aegean Sea and Sea of Marmara को connect कर रहा है, and this one Bosphorus Strait is connecting Marmara Sea with Black Sea. तो Marmara Sea बीच वाला है, इस तरफ Aegean Sea, उस तरफ Black Sea, and Marmara Sea को Black Sea से connect कर रहा है Bosphorus Strait, and Marmara Sea को Aegean Sea से connect कर रहा है Dardanelles Strait. Are we able to understand this? ये वाली चीज हमें समझ में आई है? पक्का? तो we will come to Black Sea in a lot of detail. We will come to Sea of Marmara in a lot of detail. There we will go through it with better understanding. But हम summarize कर रहे हैं important seas को. Then if I bring you here, you will see एक ना, this is Italy. तो ये इटली का जो lowest island, यहाँ पे there is a connection between this part and this one. Both are kind of Mediterranean Sea only, है ना? But there is a strait here. This strait is called Messina Strait. It connects on this side Ionian Sea and on this side Mediterranean Sea. इस तरफ वाले को Ionian Sea बोलेंगे, इधर Mediterranean Sea बोलेंगे. What is the strait called? Messina Strait. Then you will also have another strait called Otranto Strait. Otranto Strait is nothing but this one. This is Adriatic Sea, this is Ionian Sea, और बीच में ये एक, this can act as a strait, a small water body connecting these two larger bodies. This is Otranto Strait. Then Atlantic Ocean, or this is Atlantic Ocean, this is Mediterranean Sea, उनको connect करने के लिए we have Gibraltar Strait. This Gibraltar Strait also separates Europe from Africa. Then if you come on this side, एक तो there is this Yucatan Strait. देखो, this is Gulf of Mexico and this is Caribbean Sea. Right now, again, some of us may be feeling a bit overwhelmed by looking at these many names. Don't worry, कोई issue नहीं है. We will be going into Gulf of Mexico in a lot of detail. We'll be going into Caribbean Sea in a lot of detail. अभी यहाँ पे पास में Cuba है. Cuba was in news a lot. अभी recently China may have opened a spice base there. इस वजह से Cuba news में था. So we have to study this region in a lot of detail. But इन दोनों को connect करने वाला जो strait है, that is Yucatan Strait. And here if you come, this is Baffin Bay. This water body is called Baffin Bay, and इधर we have Labrador Sea और Atlantic Ocean. तो इसको connect करने वाला strait is Davis Strait. These are some of the important straits. Initially it may be looking too much burdensome, but as you will proceed in the class, you will realize ये तो बहुत easy से है, because you will see these things in a lot of you will see these things in a lot of details. You will refer to South China Sea, East China Sea, Taiwan Strait. ये सारी चीजें इतनी बार आएंगी. At the end of this session, at the end of this class, you will have much better understanding of the entire Asia. कौन सा water body कहाँ है, कौन सा strait कहाँ है, इसका neighboring country कौन है. You will have much more clear picture related to that. Do we get this? Straits are understood. Straits का पूरा perspective समझ में आया है.
some of the important states, कुछ तो इसमें बहुत important है, will be in news all the time, be it the Taiwan Strait or Malacca Strait or Hormuz Strait or the Babel Mandeb Strait, ये सब हमेशा न्यूज में रहते ही हैं, कुछ बहुत न्यूज में नहीं रहते, बट ओवरऑल व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दी वर्ल्ड मैप यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट दी स्ट्रेट्स आल्सो. लेट्स कम टू, अब हम कहाँ वर्ल्ड मैप में इंडिविजुअल लोकेशन से शुरू करते हैं. अभी तक वी आर टॉकिंग अबाउट दोज लाइंस एंड ऑल, तो इट हैड इट्स ओन. अब as I told you, we'll be starting from east and we'll keep moving towards the west. East में the first thing that we are starting with is Bering Strait. Strait पढ़ना शुरू किया था, we started with Bering Strait. Bering Strait separates this Asia and America. इस तरफ एशिया है, ये पूरा फार ईस्ट एशिया, और उस तरफ we have America. बीच में there is a small water body known as Bering Sea. ओके, और बेरिंग स्ट्रेट लोकेशन रशिया और अलास्का के बीच में है, एंड इट जॉइंस आर्कटिक ओशन एंड बेरिंग सी. और आर्कटिक ओशन का भी विच पार्ट? चुक्सी सी, है ना. अब यहाँ पे बेरिंग सी की जगह वी कुड हैव रिटन पैसिफिक ओशन आल्सो. इट इज कनेक्टिंग आर्कटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन. वुड दैट हैव बीन ट्रू? वुड दैट हैव बीन ट्रू? उसी ओशन का पार्ट है ना, जैसे इंडियन ओशन का पार्ट है बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन का पार्ट है अरेबियन सी, ऐसे ही बेरिंग सी इज पार्ट ऑफ पैसिफिक एंड चुक्सी सी इज पार्ट ऑफ आर्कटिक. तो चुक्सी सी एंड बेरिंग सी के बीच में व्हाट डू वी हैव? बेरिंग स्ट्रेट. अपन ने एक वो पढ़ा था, क्वेश्चन से पहले आंसर. हाँ, माइग्रेटरी बर्ड्स, बर्ड विच कम्स फ्रॉम बेरिंग सी. तो विवेक आंसर्ड सर स्पून बिल्ड सैंड पाइपर. इज इट सैंड पाइपर? हाँ, और क्या बोला? व्हाट इज इट्स आईयूसीएन स्टेटस? बैक पाइपर बोल रहा. अच्छा, वो बैक पाइपर बोल रहा था. बैक पाइपर क्लब सोडा. चलो, व्हाट इज इट्स आईयूसीएन स्टेटस? क्रिटिकल. एनीवेज, तो अब देखो ये वाला पार्ट ना, द डिस्टेंस बिटवीन एशिया एंड अमेरिका हियर इज लेस देन 100 किलोमीटर्स, 55 माइल्स है, राइट. This place is also very crucial for biodiversity. So during winters, when the temperature on this side is very cold, a lot of biodiversity will need to migrate to this side. How do they do it? Through this strait. This strait is this crucial. In the past, when there was a land bridge, when the water level was much lower, people have gone to America from here. देखो, before Europeans reached there in 1492. They went through the ocean route, but when Europeans reached there, were humans already there? Aztec community, ऐसे बहुत सारी, हम those were in news also, so we'll study about them. So there were already humans living there. Humans had gone to Americas for the first time around 50,000 years ago. And how did they go? They go through this route. They pass through this route. तो ये वाइल्ड लाइफ माइग्रेशन के लिए भी, बायोडाइवर्सिटी के लिए, एंड नहीं, अराउंड 13,000, 50,000 वो ऑस्ट्रेलिया वाला है. आई एम सॉरी. Humans reached to Australia around 50,000 years ago. Humans reached in Americas only around 13,000 years ago, before Europeans found a different route. So ये, so Bering Strait is crucial for all these reasons. Are we comfortable here? Torres Strait. अब Torres Strait क्या है? Torres Strait is the strait between. Can you see this? This was what? New Guinea. This was New Guinea. इसके एक तरफ तो इंडोनेशिया है, and on this side what do we have? Papua New Guinea, a country. This is Australia. बीच में is there a strait? इस तरफ की वाटर बॉडी, इस तरफ की वाटर बॉडी को सेपरेट करता हुआ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर. That strait is what? That strait is Torres Straits. Sir, you just saved me in economy. I fully covered in 3 days. I was doing eco from Murnal, sir. Wasted a month. Not able to recall 1350 pages. चलो ठीक है, thank you. Okay, let's come back.
व्हाट वर यू टॉकिंग अबाउट? टॉरेस स्ट्रेट। तो टॉरेस स्ट्रेट का पहले लोकेशन समझ में आया। नाउ टॉरेस स्ट्रेट इज नॉट अ स्ट्रेट दैट वी हैड इन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना, उसमें इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, बट आई टोल्ड यू वी विल स्टडी दो स्ट्रेट्स इन मोर डिटेल, प्लस देयर आर मोर स्ट्रेट्स आल्सो। तो फर्स्ट टॉरेस स्ट्रेट बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड मेलेनेशियन आइलैंड ऑफ न्यू गिनी। न्यू गिनी मेलेनेशिया में था, अब हमें समझ में आएगा व्हेन वी ऐसे आप सोचते मेलेनेशिया क्या है, अगर मैं सीधा न्यू गिनी की बात करता तो मेलेनेशियन आइलैंड ऑफ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में द स्ट्रेट इज व्हाट? टॉरेस स्ट्रेट। अब देखो टू द साउथ इज द केप यॉर्क पेनिनसुला, this is Australia's Cape York Peninsula, and to the north we have Papua New Guinea का western part, Papua New Guinea का western part. It has been named after a Spanish navigator who first came here in 1606, and it joins Gulf of Papua with Arafura Sea. On one side we have Arafura Sea and on the other side we have Gulf of Papua. तो स्ट्रेट तो दो वाटर बॉडीज को, दो बड़े वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है ना, तो Arafura Sea and Gulf of Papua. What is that strait? Torres Strait. Okay. Then there is Cook Strait. Cook Strait कुछ नहीं है ना, न्यूजीलैंड के ना दो बड़े आइलैंड्स है, जैसे जापान इज मेड अप ऑफ 4 बिग आइलैंड्स, ऐसे न्यूजीलैंड इज मेड अप ऑफ दीज 2 बिग आइलैंड्स। इनके बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज कुक स्ट्रेट्स। इट सेपरेट्स द नॉर्दर्न एंड सदर्न आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड, extending northwest to southeast from Tasman Sea to south. On this side we have Tasman Sea, on this side we have South Pacific Ocean. In fact, let me take you to the map here. देखो, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ही एक आइलैंड है तस्मान, एंड इसके बगल में जो सी है दैट इज तस्मान सी, दिस इज पैसिफिक ओशन। अब तस्मान सी इज आल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, राइट। दिस इज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के दोनों नॉर्दर्न आइलैंड और सदर्न आइलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है दैट इज व्हाट? कुक स्ट्रेट, दैट इज कुक स्ट्रेट। क्या हमें समझ में आया? पक्का? वी हैव क्लैरिटी हियर कुक स्ट्रेट पे। वेयर इज कुक स्ट्रेट, वेयर इज टॉरेस स्ट्रेट, आरफरा सी, आरफरा सी हम अलग से नहीं पढ़ रहे, बट तस्मान सी भी हम अलग से नहीं पढ़ेंगे, बट इफ इन केस इट कम्स इन एग्जाम, अपन ने पढ़ा होता, अपन यू विल बी लाइक हाँ वी हैव स्टडीड इट, तस्मान के पास है, तस्मानिया के पास है, एंड आरफर सी इस टॉरेस स्ट्रेट, इस तरफ न्यू गिनी सॉरी गिनी सी है, इस तरफ आरफर सी है, एंड बीच में वी हैव टॉरेस स्ट्रेट, राइट। तो so far we have covered this part. अगर आप मेरे से पूछोगे ना honestly, this was the least important part. Like to make the class interesting, to engage you more, I could have covered the most important ones first. आपको मजा भी आता, but I wanted to go in a systematic manner कि मैं east से west ही जाऊंगा, and anyways I know my students would understand कि बीच बीच में बोरिंग वाला पार्ट भी आता है, वो होगा। ये देखो उसको तो उबासी ले रही है।